Hello friends, my name is Mudassir Manzoor and I welcome you all in this new initiative of Target Computer Awareness that is going to help you in banking, SSC, GKSSB, UGC NET, police, railway and another state level recruitment exams. And here you can see some special features of this series. It include chapter wise discussion in notes forum, chapter wise question bank with each chapter, chapter wise collection of previous year questions including with 5 practice sets. So this is going to be most important section for you people that will help you in bank, PO clerk, SSC, GKSSB, UGC NET, police, railway and another state level exams. And through this entire series we are going to cover almost all the syllabus. और मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि रिवाइज करें ईच चैप्टर ईच पार्ट एटलीस्ट ट्वाइस एंड दे कैन ऑल्सो प्रैक्टिस MCQs, PYQs एज वेल बिफोर देयर एग्जामिनेशन. इसके अलावा मैं आपको ऑल्सो बता दूं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड फॉर PDF यू कैन ज्वाइन दी टेलीग्राम ग्रुप. अदरवाइज़ अगर आपको कोई क्वायरी डाउट या अगर आपको स्टडी मटेरियल ज़रूरत हो देन आप मुझे ऑल्सो मेल कर सकते हैं ऑन दिस ईमेल. एंड अनटिल हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया है पार्ट 1, 2 and 3 of this chapter in which we had discussed certain topics that are important from your exam point of view. अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा, वीडियोस आर अवेलेबल देयर, आप जाके उन वीडियोस को ऑल्सो देख सकते हैं. एंड टुडे दिस विल बी आवर फोर्थ और लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड टॉपिक जो कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट आर रोबोटिक्स, प्रोसेस ऑटोमेशन एंड फिफ्थ जनरेशन. ऑलराइट, देन लेट्स स्टार्ट. First of all, what is robotics process automation? Robotic process automation जो है it refers to the use of software robots or bots to perform repetitive and structured tasks such as data entry, invoice processing or report generation. और ये जो bots हैं, these bots basically learn or they mimic human actions on computers like clicking, typing, copying and pasting, जो कि परफॉर्म करते हैं इन टास्क उसको मच फास्टर एंड मोर एक्यूरेटली विदाउट एनी ब्रेक. तो ये जो RPA bots हैं they can also interact with applications like Excel, email or ERP systems and they also process and transfer data between systems and they also handle automatic responses or workflow and जो कि also communicate करते हैं with other software seamlessly. सो ये जो रोबोटिक्स हैं दे परफॉर्म ऑटोमेशन ये जो रोबोटिक्स है दे प्रोसेस ऑटोमेशन बॉट्स जो कि परफॉर्म करते हैं ऑल ऑफ दीज टास्क को मच फास्टर, एक्यूरेटली एंड 24/7 विच मेक्स बिजनेस ऑपरेशंस मोर एफिशिएंट एंड एरर फ्री. ठीक है. एंड सम की फीचर्स जो है RPA के इट इंक्लूड्स रूल बेस्ड ऑटोमेशन. जो RPA है इट work best for those tasks that follows clear predefined rules and structured workflow such as data entry, invoice processing or form filling. और ये जो RPA bots है these bots does not require decision making or creativity which make these bots perfect for repetitive digital processes that humans would otherwise perform manually. Then non-invasive जो RPA है it also does not require changes or modification of existing system or application but rather ये जो bots है these bots simply use the same interfaces like humans such as clicking, typing and navigating which makes automation easy to implement without disrupting the current software or infrastructure. Then user interface interaction. जो RPA bots हैं they also operate through the same screens and controls like humans like they can click buttons, they can type data, they can copy and paste information and they can also fill out forms just like a person would जो कि उनको allow करते हैं to perform automatic tasks across different applications. Then scalability. बहुत सारे सॉफ्टवेयर बॉट्स जो हैं उनको डिप्लॉय किया जाता है एट द सेम टाइम इन ऑर्डर टू मैनेज लार्जर और फ्लक्चुएटिंग वर्कलोड्स जो कि अलो करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस को टू इजीली इंक्रीज और डिक्रीज द नंबर ऑफ बॉट्स एज नीडेड विदाउट हायरिंग मोर स्टाफ which ensures efficiency during peak times. Then audit trail. In
आर पी ए हर एक एक्शन जो है जो कि बॉट परफॉर्म करता है सच एज डेटा एंट्री, फाइल एक्सेस और ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, इट इज़ बेसिकली रिकॉर्डेड इन ए लॉग। और ये जो लॉग्स हैं, दीज लॉग्स बेसिकली हेल्प टू ट्रैक व्हाट वाज डन व्हेन एंड बाय विच बॉट, which ensures transparency, accountability and easier compliance with regulations। ठीक है। एंड हियर इज हाउ RPA वर्क्स स्टेप बाय स्टेप। लाइक फर्स्ट जो है इट बेसिकली फर्स्ट आइडेंटिफाइज टास्क्स। जो फर्स्ट स्टेप है इन RPA दैट इज बेसिकली टू पिन पॉइंट रूटीन टू आइडेंटिफाई रूल बेस्ड टास्क्स that are repetitive and that are also time consuming such as data entry, form filling और invoice processing। और ये जो टास्क्स है ये हमें आइडियल देखने को मिलते हैं फॉर ऑटोमेशन सिंस दे फॉलो क्लियर स्टेप्स एंड डू नॉट रिक्वायर ह्यूमन जजमेंट। सेकंड स्टेप जो है इसमें बॉट जो है उनको डेवलप किया जाता है। इसमें आइडेंटिफाई किया जाता है पहले टास्क्स को। और जो RPA डेवलपर्स है दे यूज टूल्स लाइक UiPath, ब्लू प्रिज्म और ऑटोमेशन एनीवेयर टू बिल्ड सॉफ्टवेयर बॉट्स जो कि परफॉर्म करते हैं इन टास्क्स को ऑटोमेटिकली बाय फॉलोइंग द डिफाइंड रूल्स और वर्क फ्लोज। इन थर्ड स्टेप जो बॉट्स है इनको ट्रेन किया जाता है। लाइक RPA बॉट्स जो है इनको ट्रेन, इनको कॉन्फ़िगर किया जाता है बाय डिफाइनिंग देम रूल्स, इनपुट्स एंड प्रोसेस स्टेप्स जो कि फर्दर वो फॉलो करते हैं, विच मेक श्योर दैट कि जो पर्टिकुलर पार्ट है दे कुड परफॉर्म द टास्क्स करेक्टली जस्ट लाइक ह्यूमन वुड, जो कि एक्चुअली हैंडल करते हैं सभी वेरिएशंस को विद इन दी वर्क फ्लो। Then finally after training जो bots हैं they were put into the action to perform tasks automatically। और ये जो परफॉर्मेंस है इसको कंटिन्यूसली ट्रैक किया जाता है इन रियल टाइम टू एंश्योर एक्यूरेसी, एफिशिएंसी एंड टू क्विकली एड्रेस एनी इशू दैट अराइजेस। ठीक है। एंड सम कॉमन एप्लीकेशन और यूजेस जो है RPA के दैट इंक्लूड्स बैंकिंग एंड फाइनेंस। जो RPAs हैं एज आई मैंशनड दे ऑटोमेट रिपीटिव tasks especially financial tasks with greater speed and accuracy like loan processing, account reconciliation and fraud detection। Then in healthcare जो RPA है it also help healthcare organizations to automate routine administrative tasks like patient record update, billing and claims processing। Then in human resources like RPA जो है it also automate repetitive human resource tasks like resume screening, onboarding and payroll processing जो कि सेव करते हैं हमारे टाइम को और जो कि also रिड्यूस करते हैं एरर्स को। Then customer service जो RPA है it also automate routine customer support tasks such as automated responses, complaint login and ticket generation। Then supply chain जो RPA है it also automates repetitive logistics and supply tasks such as inventory updates, invoice processing and order tracking। Then in insurance जो RPA है it also streamlines routine insurance processes such as claims management, policy renewal and underwriting support। ठीक है। और जो बेनिफिट्स है RPA के दैट इंक्लूड्स इंक्रीज्ड एफिशिएंसी। जो RPA बॉट्स है एज आई मैंशन दे कैन ऑपरेट 24/7 विदाउट एनी ब्रेक और फैटिग जो कि कंप्लीट करते हैं रिपीटेटिव टास्क्स को मच फास्टर एंड मोर कंसिस्टेंटली देन ह्यूमन्स। देन कॉस्ट सेविंग by automating repetitive and rule based tasks जो RPA है it reduces the need for manual labor जो कि also save करते हैं money को on staffing and operational costs। Then improved accuracy as I mentioned जो RPA bots हैं they follow rules precisely जो कि reduce करते हैं mistakes को that are caused by the human error like वो एंटर करते हैं डेटा को, दे रिकॉन्साइल अकाउंट्स और दे प्रोसेस क्लेम्स विदाउट एरर्स विच इम्प्रूव्स रियलेबिलिटी एंड कंप्लायंस। देन फास्टर प्रोसेसिंग जो RPA बॉट्स हैं दे आल्सो कंप्लीट टास्क्स मच क्विकर देन ह्यूमन्स बाय रिड्यूसिंग टर्न अराउंड टाइम जो कि प्रोसेस करते हैं हंड्रेड्स ऑफ इनवॉइसेस और कस्टमर रिक्वेस्ट्स को इन मिनट्स इंस्टेड ऑफ हावर्स।
Then employee satisfaction, by handling repetitive tasks जो RPA हैं, it also allow employees to focus on more meaningful and creative work which boosts job satisfaction and their engagement. ठीक है. इसके अलावा there are various challenges that RPA faces. These include initial setup costs. To implement RPA इसके लिए ज़रूरत पड़ती है huge investment की, especially in software licenses and also sometimes consulting or developer expertise. Then not suited for complex tasks. जो RPA है, it works best for rule based repetitive tasks and they cannot handle those tasks that requires human judgment, creativity or decision making, like for example writing reports, strategic planning or resolving unusual customer complaints. Then change management, जो employees हैं they may also resist RPA adoption due to the fear of job loss or uncertainty about new workflows. Then scalability, scaling RPA to handle more processes or higher workloads, इसके लिए also ज़रूरत पड़ती है careful planning and design की, like by adding more bots without optimizing workflows it can lead to the inefficiencies or system bottlenecks. Then bot maintenance, जो RPA bots है they basically need regular updates and maintenance whenever underlying software applications और जो workflow है that changes. ठीक है. Now what is the future of RPA? जो future है RPA का, it will include hyper automation. RPA जो है it is continuously evolving or developing, that is by integrating AI, machine learning and analytics to automate more complex design based processes. Like जो bots हैं they will not only enter data but they will also analyze it, they will make predictions and they will also take intelligent actions without human intervention. Then cognitive RPA, ये जो advanced bots है they will also interpret natural language, they will also process unstructured data and they will also make context aware decisions, like they will read emails, they will extract key information and they will respond appropriately without human help. Then cloud based RPA, जो RPAs हैं जो कि होस्ट करते हैं ऑन क्लाउड, दे आल्सो allow users for simpler deployment, easier scaling and remote access by reducing infrastructure costs. Like ये जो bots हैं they will manage or they will be updated online, which will enable businesses to automate processes across multiple locations. Then RPA plus chatbots. By combining RPA with chatbots, it will also enable intelligent automated customer interactions, like it can answer queries, it can complete block and tasks such as updating accounts or processing requests. Then citizen development, जो business users have without coding skills they can also create or they can also deploy their own bots by using user-friendly RPA platforms. Like finance team members जो हैं they will build a bot to automate invoices approvals without any IT support. ठीक है. ओवरऑल अगर हम देखें जो रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन है, it is completely transforming business operations, that is by automating repetitive tasks efficiently and accurately, जो कि also allow करते हैं human beings को to focus on strategic, creative and value added work. And it is जो RPAs हैं they are also the major drivers of digital transformation, जो कि help करते हैं businesses को to be more efficient, agile and competitive in the modern digital landscape. ठीक है. तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज फिफ्थ जनरेशन दैट वी नोन एज 5G. नाउ व्हाट इज 5G? 5G जो है इट स्टैंड्स फॉर फिफ्थ जनरेशन एंड इट इज़ बेसिकली द जनरेशन ऑफ मोबाइल नेटवर्क्स जो कि ऑफर करते हैं फास्टर स्पीड, लोअर लेटेंसी एंड मोर रिलायबल कनेक्शंस देन 4G LTE, दैट इज लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन.
एंड जो 5G है इट प्रोवाइड्स वेरी फास्टर इन इंटरनेट with minimal delay and with low latency, and it can also connect many devices at once, जो कि सपोर्ट करते हैं वेरियस टेक्नोलॉजीज़ को लाइक स्मार्ट सिटीज़, सेल्फ ड्राइविंग कार्स एंड IoT नेटवर्क्स। ठीक है। एंड सम की फीचर्स जो है 5G के दैट इंक्लूड्स हायर स्पीड्स। जो 5G speed and that is very high, as we know, that can reach up to 10 Gbps, which is about 10 times faster than 4G, जो कि अलाउ करते हैं इंटरनेट यूजर्स को फॉर रैपिड डाउनलोड, स्ट्रीमिंग एंड फॉर डेटा ट्रांसफ़र। देन अल्ट्रा लो लेटेंसी, जो 5G है इट कैन ऑल्सो अचीव low latency as low as 1 millisecond, which makes it ideal for real-time applications like autonomous vehicles, remote surgeries, and also for gaming. Then massive device connectivity, जो 5G है it can connect up to 1 million devices per square kilometer, जो कि प्रोवाइड करते हैं डेंस नेटवर्क्स फॉर IoT, स्मार्ट सिटीज़ एंड ऑल्सो फॉर इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। Then improved reliability, जो 5G है it also provide stable and consistent connections, जो कि reduce करते हैं dropped calls को and also interruptions को, and ये हमें essential देखने को मिलता है for critical applications especially for healthcare and autonomous systems. Then energy efficiency, जो 5G है इसको बेसिकली डिज़ाइन किया गया है सो दैट इट कैन यूज़ लेस पावर, जो कि हेल्प करता है कनेक्टेड डिवाइसेस को लाइक IT सेंसर्स या स्मार्टफोन्स को टू ऑपरेट लॉन्गर विदाउट फ्रीक्वेंट रिचार्जिंग। ठीक है। एंड हियर इज़ हाउ इट वर्क्स लाइक, जो 5G है इट यूज़ 3 टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी बैंड्स। फर्स्ट जो है दैट इज़ लो बैंड 5G जो है इट बेसिकली प्रोवाइड्स वाइड कवरेज अक्रॉस लार्ज एरियाज, बट इट ऑफर्स स्लोअर स्पीड्स कंपेयर टू हायर फ्रीक्वेंसी बैंड्स। सेकेंड इज मिड बैंड 5G जो है it offers a balance between speed and coverage by providing faster internet than low band while covering a reasonable area. थर्ड इज हाई बैंड 5G जो है it delivers very fast speed, but इसके हमें लिमिटेड कवरेज एरिया देखने को मिलते हैं, and it also has a poor ability to penetrate or to cross through buildings, walls, furniture, which makes it ideal for dense urban walls. And जो 5G technology है it use various technologies to operate like massive MIMO जो है it uses many antennas on single tower to handle more data, and बहुत सारे users जो है they can use it at the same time, which increases network capacity and it is efficiency. Then beam forming जो है it basically directs wireless signals towards specific devices instead of spreading them in all directions, which further leads to the faster and more reliable connections. Then network slicing जो है it basically divides a single physical network into multiple virtual networks. Each is used for own specific purpose like emergency services, IoT or for gaming. इसके अलावा there are various applications or uses of 5G. These include enhanced mobile broadband. 5G जो है it enables HD streaming, VR, AR experiences, smooth video calls with high speed and low latency, that is by improving everyday mobile connectivity. Then in smart cities, 5G जो है it also supports real-time traffic management, smart street lighting and public safety monitoring, which makes urban areas more efficient and safe. Then in healthcare, 5G जो है it also enables remote surgeries, real-time diagnostics and continuous monitoring through wearable health devices, जो कि improve करते हैं patient care and also medical efficiency. Then in Industry 4.0, जो 5G है it also supports automation, smart factories and predictive maintenance, जो कि allow करते हैं industries को to operate more efficiently and to reduce downtime.
Then in autonomous vehicles, जो 5G है, it also enables instant communication between the vehicles, traffic signals and infrastructure, enhancing safety and by also enabling self-driving cars to operate efficiently. Then in Internet of Things, जो 5G है, it also provides faster, reliable connectivity for billions of smart devices. That is by supporting various applications, including smart homes, wearables, and industrial sensors. ठीक है. इसके अलावा there are several benefits of 5G. These include faster data transfer. As you know, जो 5G है, it enables ultra fast downloads and uploads, which makes video streaming, gaming, and larger file transfer much quicker than 4G. Then better user experience, like जो 5G है, it offers smooth streaming, lag-free gaming, and seamless video calls, जो कि improve करते हैं overall mobile and internet experience को. Then supported for advanced technology, जो 5G है, it also enables virtual reality, augmented reality, and other AI applications को to work smoothly with low latency and higher speed connections, जो कि also unlock करते हैं new experiences और inventions को. Then a more reliable communication, जो 5G है, it also provides stable, consistent connections by reducing dropped calls and network interruptions, especially in crowded or critical areas. Then enables innovation across industries, जो 5G है, it also support new technology and business models, especially in healthcare, transportation, manufacturing and smart cities, जो कि promote करते हैं growth and innovation को. इसके अलावा there are various challenges that 5G faces. These include infrastructure cost. To deploy or to set up 5G, it needs towers, base stations, and equipment, which can be very expensive and time consuming to set up. Then limited coverage. जो हाई स्पीड वेव 5G है, it also has a poor building penetration and limited range. So इसकी जो coverage है, that basically restrict it to certain areas. Then security risks. With more connected devices, जो 5G network है, it also have a larger attack surface, which basically increase the risk of cyber attacks and data breaches. Then health concerns. There are also ongoing research on the effects of 5G radiation, though no conclusive evidence जो है concurrently that shows harm to humans. Then device compatibility. To use 5G devices जो हैं, they must be upgraded 5G. They must be 5G enabled, which makes older smartphones या 4G phones and hardware inefficient for this, that they cannot access the 5G network. Okay. Now what will be the future of 5G? Expectations that we made includes global rollout. जो 5G है, it will be adapted by more countries and cities due to its expanding high speed connectivity worldwide. Then 6G research. जो research है, that is still underway for 6G, which will aim for faster speeds, lower latency, and smarter, more intelligent networks beyond 5G. Then smart world integration. जो 5G है, it will accelerate the adoption of AI, IoT, and robotics, and it will create smart cities, industries, and also it will enhance daily life experience. Then digital economy boost. जो 5G है, it will also support remote work, virtual events, and also e-commerce, which will further drive the growth in the digital economy. ठीक है. ओवरऑल अगर हम देखें, जो 5G है, इट्स नॉट जस्ट फास्टर इंटरनेट, बट इट इज़ ऑल्सो द फाउंडेशन फॉर द कनेक्टेड, स्मार्टर एंड डिजिटल फ्यूचर. एंड बाय एनेबलिंग रियल टाइम ubiquitous connectivity, जो 5G है, it is continuously driving smart cities, advanced industries, and more connected world. सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा. और इसी के साथ ही जो हमारा चैप्टर 15 का थ्योरी पार्ट है, वो एंड होता है. तो इसके बाद हम MCQ सेट करेंगे
डिस्कस MCQ सेट, खाली एक सेट हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे विथ डिटेल। सो वो आप ज़रूर देखें, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेशन में ज़रूर लिखें, या आप मुझे मेल कर सकते हैं ऑन दिस email, एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, एंड फॉर PDF you can join the Telegram group. So that's it for today. I hope you find this video informative. Don't forget to share, like and subscribe to Discipline Talk channel. Thank you for watching.